involved manually rupturing a bride's hymen in front of the village to prove her purity. This demeaning right महिला भी तो एक इंसान है, हद कर रहा हो यार तुम लोग यार। but by the सर, औरत की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं या फिर औरत की क्या छवि है आपके दिमाग में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, औरत की मेरी नजर में तो एक ही छवि है, उसको मैं देखता हूँ सम्मान की निगाह से। वो इसलिए देखता हूँ कि आज मेरे को देख लो, क्योंकि मेरी माँ नहीं होती दुनिया में तो मैं कैसे होता, इस निगाह से देखता हूँ मैं। सर, आज जितने भी दुनिया में महापुरुष जन्म है उसके पीछे एक औरत के हाथ है। अगर औरत ही ना होती तो महापुरुष वो पैदा कैसे होते? जैसे कि गांधी जी देख लो, माइक टायसन जो हमने देखा ताकतवर, मोहम्मद अली बॉक्सर, ये बड़े बड़े लोग जो विद्वान गुजरे और बड़े बड़े ताकतवर लोग गुजरे, इसके पीछे एक औरत के तो हाथ है सर। हमारे समाज में औरत उनकी तो बहुत इज्जत की जाती है, मान सम्मान दिया जाता है। देवी के रूप में आती है और देवी के रूप में पूजा पाठ और सब पाँव छूते हैं। सही बात है। मन्नत तो करते हैं। इतने ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ मैं, सही बात है। देवी माँ होती है। सही, बिल्कुल सही बात। नहीं होती तो हम भी नहीं होते दुनिया में। सच बात। ठीक है सर, जिस टॉपिक पे आज हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, दरअसल वो एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील टॉपिक है। उसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सिज्म। मतलब कि आदमी और औरत के बीच में आज से नहीं बल्कि हमेशा से भेदभाव चला आ रहा है, जिसमें औरत को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है और मर्द अपने आप को पहले दर्जे का नागरिक खुद समझता है, जबकि ऐसा है नहीं। आप भी जानते हैं कि भगवान ने सबको बराबर बनाया। जी जी। और मैं चाहता हूं सर आप इस वीडियो को देखें कि क्या इतिहास रहा है, औरतों के ऊपर कैसे अत्याचार हुए हैं, उनसे कैसे भेदभाव किए गए। जी जी। और उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दें। अब आपने बात इतनी भारी कर दी है, संवेदनशील, बड़ी भारी बात है आपने जो बोला कि ये चीज़ चले आ रही। सर, ये चीज़ तो हम भी सुनते आ रहे हैं कि जो है कि औरत को जो है कि हमेशा दूसरे दर्जे में रखा जाता है। अब चीज़ आप जो कहना सर, देखना चाहूँगा आखिर क्या इतिहास रहा। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, देखना चाहूँगा मैं तो ये। सर बिल्कुल देखना चाहेंगे, जो आप बता रहे हो उससे हमारे को सीख भी मिलेगी। बाकी मेरा मानना है कि औरतों को पहले दर्जे पे रहना चाहिए। वो इसलिए रहना चाहिए कि वो जन्म देती है औलादों को। हमारे समाज में तो औरत उनका अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। ये तो देवी माँ है, इनका अपमान क्यों करे यार? ये तो माता जी है, देवी माँ है, इसलिए इनका अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लगाइए सर। In all stages of our history, women have been struggling through a second-class life. हाँ सही बात है। It wasn't just that women didn't have the right to vote or that they didn't get equal pay. Women's lives were like a horror story. क्या बात कर रहे हो? Here are 12 horrible realities of being a woman throughout history. चलिए देखते हैं फिर। Women's menstruation. A prominent Roman philosopher, Pliny the Elder, wrote this about women's menstruation. On the approach of a woman in this state, milk will become sour. He then went on to say, a swarm of bees, if looked upon by her, will die immediately. In both Egypt and Israel, women spent their menstrual cycles in separate buildings where men were not allowed. अच्छा ऐसा होता है। Israelis were convinced that by touching a woman on her menstrual cycle, or even anything she touched while she was on her menstrual cycle, would render them all unclean. आज In भी लोग Hawaii, कई the ऐसा penalty of मानते हैं। death could be leveled against a man who entered the hut of a रे menstruating बाप woman. रे बाप, मौत की Women सजा were डायरेक्ट। expected to हद है die यार। when their husbands did. Women may have a longer life expectancy than their husbands do now, but in East Asia, up until the 1800s, when a woman lost her husband, she was required to die as well. पहले ऐसे ही प्रकार थे, अब खत्म हो चुका है हाँ, क्या? सती प्रथा कहलाती थी। सही। If the wife didn't kill herself before the funeral, she would have to brave the funeral pyre while still alive. But brides weren't just burned for regular funerals. हाँ यार, ये दिल They would देता also burn है यार। themselves and ये तो their अच्छा खत्म हो children गई। ahead of दिल दिला देती नहीं तो ये। हाँ। if the war effort was going poorly for their husband. Women were forced to kill their own children. Women were अरे यार, ये forced to तो- become the villain themselves when it came to unwanted births. In ancient Rome, the mother of a baby with a disability was expected to abandon it somehow. ये तो कुदरती है यार, इसमें or मासूम बच्चे का suffocate क्या दोष है यार? themselves. Even in Israel, the bones of at least 100 disabled babies have been found by archaeologists in the city's sewer system by the shore. ये सब जान के मेरी आंखें भी खुल रही हैं और बहुत अफसोस हो रही है मेरे को। सही बात है। If you were a woman in ancient Greece or Rome, there was no complaining either. Women were not allowed to speak when company came, let alone sit down to dinner. It was early bedtime and dinner in their room for the women of the house, so as not to disturb the men. वाकई कैमरे में कैद हो गई चिड़िया। सही बात है। To leave the house was in the company of men, a practice that many women put up with to this day.
At least it's not as bad as medieval Denmark, where women who argued or vented their grievances were restrained in something called a shrew. हत्ते यार देखो यार This device would bind a woman's hands and face. The real insult was making her walk around town with a bell fastened to her head to महिला की complete बेइज्जती करना बहुत बुरी बात होती है. Slave girls were one thing, but wives were another. Sleeping with someone's slave girl may have been a misdemeanor in Rome, but wives were a different story. A male who was a Roman citizen could kill his wife without repercussion, as long as he killed her male lover as well. लगता है राजू जंगल का कानून था उस वक्त. लगता है सही बात Women है have been होएगा. historically discriminated against during their time of the month. This is still much better than the baby girls in ancient Greece and Rome ever got. While favoring the birth of baby boys, baby girls were commonly the victim of something called exposing, where they were left in the wilderness by their parents to die. Even Egyptian girls, who were more बेटे लोग socially करने वाले didn't नग fare में much जाएंगे better यार. when हद they कर came दिया. to their families. Property damage. In ancient Rome, a priestess who served the goddess Vesta could be buried alive if she was sexually active before the age of 30. On the other hand, sex with the master was in a Roman slave girl's job description. Friends of the master had to ask his permission to sleep with his slave girls first, or else they were charged with property damage. Owning real estate and credit cards in the United States. Women couldn't own real estate in their own name in the US until 1839. And then only in the state of Mississippi. अमेरिका से ये उम्मीद नहीं थी यार मेरे को. अमेरिका की तो अलग ही छवि और अलग ही वो समझता हूँ मैं तो यार. Almost impossible to get a credit card. Even into the 1970s, the card could only be issued in the husband's name. The Equal Credit Opportunity Act of 1974 fixed this, but as any woman can tell you, they still have a long way to go for real equality and equal rights. The very shameful one. Women were required to be virgins until marriage, or else. Unmarried daughters who were sexually active could be sold into slavery by their fathers in ancient Athens. Meanwhile, in Samoa, part of the wedding ceremony involved manually rupturing a bride's hymen in front of the village to prove her purity. This demeaning right महिला भी तो एक इंसान है. हद कर रहा हो यार तुम लोग यार. but by the chief of the tribe on his behalf. क्या बोलोगे इसके आगे तुम? Stage. Women were not allowed to appear on the theatrical stage until 1660. Although Shakespeare wrote many of the best female roles in the history of the theater, it was illegal for women to perform them. Instead, the roles were given to prepubescent males to portray until many years after Shakespeare's death in 1616. Kidnapping. Kidnapping brides continues as a way to get married. The capturing of women and making them into wives is even documented in the Bible. हद हो गई यार अब तो. There, though. In the 1800s, stealing women for wives was widespread in Ireland and existed until the 1940s in China. Shockingly enough, it went on until हद है यार. अब तो शर्म आना चाहिए अपने आप पे हमको यार. Before history was recorded, the cruel treatment of women started at the dawn of civilization, even before history was recorded. In fact, it was archaeologists in Africa who found the first evidence of misogyny in the remains of prehistoric villages, which indicated that while the men remained in one place, the women were often moved around. So while the men enjoyed a long life in their own home village, the women were imported from other scattered areas. What this suggests to archaeologists is that in these involuntary marriages, women were kidnapped and then forced to start families with the men who had captured them. तो बहुत So बड़ा that's 12 अत्याचार horrible है तो. realities of being a woman throughout history. बहुत दुखदायी इतिहास रहा है यार. बहुत दुख की बात थी यार. पुराने जमाने में बहुत ये अत्याचार हुआ और मैं बहुत अफसोस हूँ. मैं बहुत ये हुआ यार. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. बाकी बड़ा खतरनाक और बड़ा काला इतिहास रहा सर. सुन के मेरी आंखें दंग रह गई, कान मेरे फट गए कि यार ऐसा इतना खतरनाक अत्याचार हुआ. अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए. क्या बोल सकते हैं, शर्म से आके झुक जाएंगी. महिलाओं पे खास तौर पे बहुत खतरनाक अत्याचार हुआ है. ये तो अपने आप पे शर्म आ रही है बिल्कुल ही कि कैसा मतलब उनको मतलब उनकी जिंदगी भी है कि नहीं है यार कुछ यार है. सर बड़ी खुशनसीबी है और हम अपना खुशनसीबी मानते हैं कि हम ऐसे वक्त में जीते हैं आज के महिलाओं की आवाज उठाने वाले लोग मौजूद हैं और महिलाओं के अधिकार आज बाकी हैं सर. आज तक के लोग भी ऐसे यार
इस्तेमाल देते हो खाने के पत्तल में आता नहीं, खाना खाया वो पत्तल फेंक दी। अब एक लोग तो इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं यार लोग यार, इस्तेमाल शर्म आती नहीं, जरा सी भी शर्म नहीं है यार। हाँ, इस्तेमाल करते ही छोड़ देते हैं, शर्म तो आना चाहिए, थोड़ी शर्म आ। सही बात है। बाकी सर ये जो इसने जो है कि आंखें तो खोली है, एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई सर ये वीडियो, बहुत बड़ी जानकारी दी। यार इसी से घटनाएं घटी हमारी माँ बहनों पे, जो पूर्वज हमारे गुजरे हैं, खास करके माँ बहनें बड़े दुख सहे उन्होंने। ऊपर वाला उनकी जो है कि आत्मा को शांति दे और अच्छी जो है दर्जों पे वो हों। देवी और कन्या समझ के रखा करो। सही बात। मान सम्मान रखोगे तो मान सम्मान दोगे। जैसा आप मान सम्मान दोगे वैसे आप अपने घर की बहन बेटी पे मान सम्मान मिलेगा, वरना सबके साथ ये होना, अगर आपने दूसरों की बहन बेटी पे गलत निगाह रखी तो फिर वो तुम्हारी बेटी भी ऐसी होगी, तो आपकी बेटी भी जो है कि शिकार होने वाली है। सही बात। सर माता और बहनों की बात चल रही है तो मेरा ये गाना सुनिए इसके ऊपर। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको मान लूं, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। माँ ओ मेरी माँ, तुम्हें तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पाला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।